Every year, bridges collapse, cars corrode, and ships lose millions of rupees because of one silent enemy, corrosion. Let's uncover the chemistry behind this fascinating process. Corrosion जो है, what is actually corrosion? तो corrosion जो है एक spontaneous phenomenon है. It is a spontaneous process. Though it is a gradual process, but it is spontaneous. It occurs of its own. तो होता क्या है? जब भी कोई भी metal, with some exceptions like gold and platinum, so कोई भी metal हो, when they come in contact with the atmospheric gases and the water vapors. These water vapors and the gases present in the air like oxygen and carbon dioxide, they react with the metal atoms at the surface and form certain undesirable surface compounds. And with the result, they will consume the metal atoms and they will slowly start eating up the metal. And that process of slow eating up of a metal in presence of moisture and the gases present in the air like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. to form certain undesirable surface compounds like carbonates, sulfides, oxides, etc. That process is called as the corrosion of metals. Okay, तो इस corrosion of metals में सबसे जो basic common example है that is rusting of iron. Clear? तो rusting of iron में क्या होता है? What it is? Rusting of iron में when iron is getting exposed to oxygen and carbon dioxide in presence of the moisture, it forms an undesirable surface compound which is a rust, and that is hydrated ferric oxide. देखो iron atoms combining with the oxygen and water, X times water, and it is forming this rust. This is the rust, Fe₂O₃ into X times water. And this rusting of iron, अगर आप देखोगे, it is a very slow process, gradual process. It takes years for the rusting to happen. Okay, तो क्या होता? But it is a continual process. Once the rust layer is formed, that rust layer gets peeled off. The new surface layer is getting exposed to the moisture and atmospheric gases, and again the corrosion will start, and slowly it will eat up the whole metal, means iron here. Okay, it is not confined to the rusting of iron only, but silver may be rusting होती है. अगर आप देखो silver जो है with passage of time it gets tarnished, it is glittering effect goes down, glittering surface जो है वो tarnish हो जाती है, so grey color पड़ जाता है. Actually why this happens? It is because it combines with hydrogen sulfide present in the air and it forms silver sulfide, and that is giving a tarnishing look to the silver surface. Clear? And यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. इसी तरह अगर आप कॉपर को देखोगे, कॉपर में भी क्या होता है? वहाँ पे रस्टिंग होती है. अगर आप देखो फेमस, मैंने ये एग्जांपल कोट की थी, दैट इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर का बना हुआ है. क्लियर? लेकिन आज अगर आप देखो ना, उसका कलर वो ग्रीन है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? Corroded material, surface compound, and that surface compound, that surface compound is this copper, basic copper carbonate. Basic copper. That is CuCO3 and CuOH whole twice. That is basic copper carbonate, and it is formed when copper metal gets exposed to oxygen, carbon dioxide, and water vapors, and it results in the formation of this greenish material on the surface. Got my point? तो दैट इज ऑल अबाउट करोजन. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो स्पेशली इसका मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, अगर हमारे पास एक आयरन सरफेस हो and it is, let us suppose if it contains a droplet of water, if it comes in contact with the moisture, that droplet of water on the surface of that metal is behaving as if it is a miniature electrochemical cell. Clear? कैसे? वो जो सरफेस ऑफ द मेटल जो है, उसका जो एक साइड, एक पोर्शन है वो एनोड एक्ट करता है, दूसरा साइड जो है वो कैथोड एक्ट करता है, और तीसरा इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट. और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? दैट इज अ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन दैट वाटर ड्रॉपलेट. क्लियर? ये क्लियर हो गया ना? तो अब क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग? अगर आप देख लो, यहाँ पे मैंने सरफेस ऑफ द आयरन मेटल बनाई है. ये सरफेस ऑफ द मेटल इज कवर्ड बाय अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. दिस इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. क्लियर? तो क्या होता है एनोड पे? क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड? एनोड पे क्या होता है? देयर ऑकर्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम्स. These iron atoms get converted to iron dipositive and it releases two electrons. These iron dipositive ions are released into the solution. Clear? Into the water. Clear? And these electrons are passing towards the cathodic area. समझ में आया? So this is what is happening at the anode. ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस conversion of Fe to Fe dipositive, which is 0.44 volts. Clear?
समझ में आया? इसी तरह अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे व्हाट इज हैपनिंग, कैथोड पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एंड दिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग एंड इज फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, and this carbonic acid, you know, it is an acid and it will arginous acid, it will release H positive ions. Okay, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है H positive ions in the solution. These at the cathodic area, these H positive ions will pick up those two electrons and combine with the oxygen and form water. Means two H positive ions picking up the oxygen and two electrons from the anodic area and they are forming water. So this is the cathodic reaction. Okay, तो अगर हम देखें इसका reduction potential कितना है, वो है 1.23 volts. Clear? समझ में? तो अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शन आपकी ये आएगी, है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब है नेट सेल रिएक्शन में हमारे पास Fe डाइपॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन है। अब जो ये Fe डाइपॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन है, दे आर पासिंग टू द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट एंड दे आर गेटिंग फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन। ओके, दे आर गेटिंग फर्दर oxidized by the oxygen, and when they are further to what, these ferrous ions are getting converted into ferric ions. Okay, ferric ions means they are getting converted into ferric oxide. They are getting converted into ferric oxide. So यहाँ पे जब ferric oxide बनेगा तो हमें 4H positive ions फिर से रिलीज हो जाएंगे। ये 4H positive ions फिर से जाएंगे किस पे, कैथोडिक रिएक्शन। अभी हमें H positive यूटिलाइज होते हैं ना, तो ये जो है फिर से यूटिलाइज होंगे तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी, कंटिन्यूअल, it goes on, repeats on its own. So that means this ferric oxide हमें बना, अभी ferric oxide dissolve होगा in the water and it will form hydrated ferric oxide, and that hydrated ferric oxide is actually what, rust. फिर मैंने बताया कि क्या सही में ये electrochemical cell जो है it is spontaneous or not, whether it is generating an EMF or not. So we can get that EMF of a cell will be oxidation potential of the anode plus the reduction potential of the cathode, and that is coming out to be 1.67 volts. So EMF is coming out to be positive. The positive indicates that this process is a spontaneous process. That is why it is happening on its own. Got my point? If you found this helpful, subscribe to Parvaizenium for more chemistry concepts.